1945 is the year when we have the beginning of the Cold War. Then what we have seen so far is time period from 1945 to 1962. This is the first phase. In that first phase, you may have some years of thaw, etc. वो तो हल्की सी बुगी है. So and why the thaw occurred on one side because of the changes in Russia and on the other side because of changes in America. In Russia, we have the going away of Stalin and coming of Nikita Khrushchev, and Khrushchev started something called as de-Stalinization and peaceful coexistence. दोनों चीजें थी. And in case of America, we have seen that McCarthy was discredited. McCarthyism was the Red Scare that completely grappled US from within, but now he was no more, he was discredited. So we know that people did not have to worry much about communism completely. So because of these two things, thaw started, but nonetheless, escalations continued. This is the first phase. In this first phase, we have seen some crisis, like कोरियन क्राइसिस in 1950s. उसके पहले भी आता है बर्लिन ब्लॉकेड. Then Korean crisis. Vietnam was started correctly before here, continued afterwards. तो वो चलता रहा थिएटर में. वो 70s में जाके खत्म होता है. 30 years, of which the first 10 years are against France and 20 years are against America. ना complete total 30. Okay, and now we have come to the next phase. That phase starts from 62 and goes on till 79. Yes. Then from 79 we'll go to 85. From 85 we'll go to 91. So there are total 4 phases of the Cold War. Very simple, very straightforward. In the first phase we have beginning, we have escalation in Europe. Then we also have war going outside Europe, and we also have thaw. And we have seen those dimensions very well. Now we will see something happened in 62 very significantly, that is the Cuban Missile Crisis. That was a turning point. World came at the brink of war कि अब नहीं तो कल युद्ध पक्का हो जाएगा, and that युद्ध will be a nuclear war. वहां से एकदम एज पे जाके दुनिया लौट के आई, and then people realized कि भाई ये तो कुछ गलत है, ऐसा नहीं हो सकता. So we started to go for some kind of betterment of relationship, and that phase is 62 to 79. So this phase is called as detente. 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 थॉ आप भूल गए परसों का लेक्चर. थॉ मतलब सुख सुख बुगी, वार्मिंग ऑफ द रिलेशनशिप. अभी यहाँ से एस्केलेशन होता है, बट थोड़ी रिलेशनशिप बेहतर होती है, उसको थॉ बोलते हैं. ये देखो, यू हैव द हैंड आउट ऑफ कोल्ड वॉर पार्ट 1. इन दैट देयर इज अ सेक्शन. पार्ट 1 में एक सेक्शन है थॉ करके. गिव इट टू मी. आगे रिवाइज नहीं किया हो ना. आखिरी पेज थॉ किया तो है रिवाइज. भूल गए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. सो यू हैव 62 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दैट वी शैल सी इन सम टाइम, एंड देन विल गो टू डेटांट. डेटांट मतलब अब रिलेशनशिप बेहतर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं. बट देन सडनली इन 79 थिंग्स चेंज एंड थिंग्स गो स्टार्ट गोइंग साउथवर्ड्स, एंड चीज़ें और ख़राब होती है. सो दिस फेज 79 to 85 is called as New Cold War. New Cold War. And then from 85 things starts changing कि भाई अब तो Cold War खत्म, and in 91 USSR is no more. So 85 to 91 phase is end of Cold War. So if you want to plot it, let us try. मैंने भी सोचा नहीं है. प्लॉट अगर करना है
तो इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड वॉर कैसे प्लॉट करोगे? समझो दिस इज योर एक्स एक्सिस, इट स्टार्ट समवेयर हियर, इट गोज समवेयर हियर, इट कम्स डाउन समवेयर हियर बिकॉज ऑफ थॉ। तो ये है, एंड देन in 62 it goes to the peak, right? Cuban Missile Crisis is the peak of the Cold War, yes, जो आज हम देखेंगे। उसके बाद थॉ आता है तो दोबारा चीज़ें यहाँ तक इम्प्रूव होती है, सॉरी डेटांट आता है। तो दिस इज द एस्केलेशन, दिस इज द थॉ, दिस इज Cuban Missile Crisis. Then you again go down because of detente, improvement in relationship. But suddenly things start going साउथ, मतलब डूबने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैप में नॉर्थवर्ड्स होगा अब यहाँ पे इस तरह के मैप में। तो यू हैव अगेन न्यू कोल्ड वॉर एंड देन द थिंग्स एंड। सो रिलेशनशिप दो बार इंप्रूव होती है, एक बार इन थॉ एंड एक बार इन डेटांट। Causes of both of them are different. The consequences of both of them are overlapping, but specifics are different. तो ये आपका थॉ है, which is a smaller detente, and this is a actual detente. Yes, ये क्यूबन मिसाइल 62 के ऊपर है ना एग्जैक्टली, ठीक है। So these are the major phases. Why this diagram is important? Not only to memorize things, but once I would request you, once our complete Cold War is done, then you should plot many events on this graph. क्यों? Because UPSC also had asked questions in the past, और questions ऐसे थे जिसमें वो बोलते थे कि events and phases, what have been the major phases in the Cold War? Explain. ऐसे simple straightforward questions आए हैं। Now those questions sometimes had come in 60 marker. अब 60 मार्कर में आप उसको लिखोगे तो आपके पास भाई 5-10 पन्ने हैं, ऐसे लिखो, but no more 60 marker is there. We have to write in 20 marks. So to condense that in 20 marks, आपको ग्राफ बहुत यूज होगा। But only thing is that this graph right now is not completely useful because इसमें सारी चीजें plotted नहीं। But that is your exercise. After we finish the Cold War, what are the major, जैसे बर्लिन ब्लॉकेड यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, राइट, नाटो फॉर्मेशन यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन 49 यू हैव द एटम बॉम्ब बाय रशिया। तो ये सारी मेजर चीज़ आपको खुद से प्लॉट करनी, जो हमने सारी किताब में नोट्स में लिखी हुई है वन बाय वन, ठीक है। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ टाइम लाइन टुडे। व्हाट वी शैल ट्राई टू डू, वी शैल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कोल्ड वॉर का पार्ट है ना, वो है बिगिनिंग एंड द एंड। So in the beginning, what are the causes? Is real cause, is material cause ideological, power vacuum, going back to history? We have seen that, वहाँ पे analysis आता है, perspective, Marshall, Truman, सब कुछ वहीं पे है, that is in the beginning. So the questions would be asked on that. And second and equally more important is the end part. यहाँ पे आता है decline of USSR. What are the reasons and factors of decline of USSR? UPSC has asked questions on that as well. Once you are very thorough with the beginning and end, then the third type of question is about the phases. Phases wala question is very simple. You have to just pick up some facts, draw some diagram, and just represent the facts. Dono. Okay. And then finally, you have certain questions which are about intermediate topics. That could be about certain specific phase or certain specific issue. A question can be on Korean War, on Vietnam War, on Cuban Missile Crisis when world come on the verge of the war. It could be on detente. What are the reasons of detente and why it did not sustain in long term, etc. So वो भी सारे देख लेंगे, ठीक है।